हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ श्योर। सो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के और करंट अफेयर्स, जो हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब टू पाथ श्योर। और जो इस सीरीज़ की कंपाइल्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। या आप टेलीग्राम में जाके पाथ श्योर सर्च कर सकते हो, पाथ श्योर के ही नाम से वहाँ पे भी चैनल है। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट टू आवर पॉइंट। आज का क्वेश्चन पहला क्या है? The manufacturing facilities of Dr. Reddy's laboratory in Bachupalli, Hyderabad, and OSD, that is Oral Solid Dosage Plant Indoor, जो सिप्ला का है, have been recognized as a part of Global Lighthouse Network। जो एक ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है, ये किसका इनिशिएटिव है, किस ऑर्गेनाइजेशन का? यही इस क्वेश्चन में बताना है। ये किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव। कौन? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप? कौन सी कंपनी ने वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया है? दैट इज गूगल। नेक्स्ट इज पीएम डिवाइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पीएम डिवाइन है, ये रिसेंटली न्यूज में आता है, ये किस के लिए किस डेवलपमेंट के लिए है, किस एरिया की? दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है। नेक्स्ट इज according to a recent allowed by World Health Organization, cough and cold syrups produced in India have led to 66 deaths among children in which of the following countries? कहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्च किया कि इंडिया में जो बन रहा था दवाई एक, जो किसके लिए? कॉफ एंड कोल्ड साइरप्स के लिए, उससे 66 डेथ्स हुए किस कंट्री में? दैट इज गैम्बिया। नेक्स्ट इज Section 66A of the Information Technology Act 2000, recently seen in the news, was declared unconstitutional by Supreme Court in which of the following cases? किस केस में उन्होंने Section 66 of the Information Technology Act को unconstitutional बताया? वो कौन है? श्रेया सिंघाल केस। Next is Indian naval warship INS Tarkash reached Port Gueria, that is Port Elizabeth, South Africa, to participate in the joint multinational maritime exercise IB Summer 7th. It was held between the navies of India, South Africa and which of the countries? हमें इसमें पूछना है कि जो IB समर है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था? INS तारकश, दैट इज नेवी का जो वारशिप है, ये किस किस कंट्री के बीच में होता है? इंडिया, साउथ अफ्रीका और किस कंट्री के बीच में? दैट इज ब्राजील। नेक्स्ट इज Himachal Pradesh has launched a new scheme, HIMCAD, for which of the following sections of the population? HIMCAD किस सेक्शन के लिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की? दैट इज फार्मर्स। नेक्स्ट इज recently which of the following states has notified India's first ever cylinder loris century? That is Kadwar cylinder loris century, किसमें? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज recently which of the following organizations has published the World Economic Outlook Report October 2022? कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 was released by which of the following organization? जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, ये रिलीज कौन करता है? दैट इज WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क है, ये किस डे पे ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज 13 अक्टूबर। नेक्स्ट इज recently JKSSB for renewable fuel program under JKSSB 2.0 program was organized. It is an initiative of the following? जो JKSSB for renewable fuel है, ये किसका इनिशिएटिव है? दैट इज CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. Next is Neuruvera megathelic burial and Chila Somash Varlium heritage sites recently seen in the news. In which of the following states? ये कहाँ पे है? जो ये heritage sites है, that is Neuruvera megathelic burial and the Chaya Someshwarlam, ये कहाँ पे? ये heritage site, that's on तेलंगाना। Next is leopards have sighted in Asolbati wildlife sanctuary for the first time since 1940. It is situated in border between Delhi and which of the following? जो ये Asolbati wildlife sanctuary है, ये किस बॉर्डर पे है? दिल्ली और किसके बीच में? दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट इज recently 13th edition of the Rajasthan International Folk Festival 2022 were organized in which of the following cities? जो राजस्थान का इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2022 का ऑर्गेनाइज हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सीकिंग इन नेशनल ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, बेटियां बने कुशाल, बेटियां बने कुशाल, वाज ऑर्गेनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड? इट इज सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? हमें बताना है कि जो इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड है, ये किस डे पे सेलिब्रेट होता है? दैट इज 11th अक्टूबर। नेक्स्ट इज मिलिट्री ड्रिल्स Indestructible Brotherhood 2022 have been cancelled. It was supposed to take place in which of the following countries? जो Indestructible Brotherhood जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है, कैंसिल हुई थी, ये कहाँ पे हेल्ड होने वाली थी? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में। नेक्स्ट इज गुलनास
के रिसेंटली सीन द न्यूज इज ए नेविगेशन सैटेलाइट विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। जो गुलनास के है जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री का है, दैट इज ऑफ रशिया। नेक्स्ट इज which of the following banks have created a world record by staying and swinging 101 angels, that is swinging simultaneously at a single venue। ये कौन है, साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट इज टेलीमनास रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड विच आर द फॉलोइंग। जो है ये ऊपर भी क्वेश्चन आए थे एक वाले पार्ट में, ये किसकी हेल्थ रिगार्डिंग है, मेंटल हेल्थ। कौन, टेलीमनास। नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फेज फर्स्ट ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। कहाँ पे, अक्सर जहाँ पे नरेंद्र मोदी ज़्यादा डेवलपमेंट करता है वो कौन है, गुजरात में, अहमदाबाद। नेक्स्ट इज रिसेंटली a feature called Bharat Skills Forum has been added to Bharat Skills Learning Platform. It is launched by Directorate General of Training which comes under the Ministry। ये Directorate of General Training है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Next is recently the Indian Meteorological Department has partnered with United Nations Development Program, that is UNDP, which are the following countries on climate change। किस कंट्री के साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये पार्टनर किया है, UNDP, that is with जापान। Next is which of the following organization has launched the State Universities Excellence, that is श्योर स्कीम किसने लॉन्च की, that is साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, श्योर स्कीम किसने लॉन्च की, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने। Next is which of the following organizations has asked the credit companies to designate an internal ombudsman by April 1st 2023। किसने बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कब से, इसी जो महीना है अप्रैल, इसी के फर्स्ट से इनको ये ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जीई गैस पावर फॉर फिजिबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस। किसने, एनटीपीसी ने। Next is All India Institute of Ayurveda has signed a memorandum of understanding, that's MOU, with National Institute of Advanced Industrial Science and Technology of which of the following countries। किसके साथ, किस कंट्री के साथ, जापान के साथ। किसने, All India Institute of Ayurveda। Next is the center has established how many member task force to oversee the reintroduction of cheetahs in Madhya Pradesh, Kunuz National Park। कितने, 9। Next is Reserve Bank of India has launched a concept note to raise public awareness about CBDC. It is related to which of the following, that is digital currency। Next is the ethanol blending program interest subsidy scheme has been extended till which of the following years। कब तक, मार्च 23 तक ये एक्सटेंड की गई थी। Next is recently which of the following states Union Territories has inaugurated the Bird Festival 2020 to the first of its kind initiative in collaboration with Century Nature Foundation। ये किसने, हमारे JNK ने, जम्मू एंड कश्मीर ने। Next is recently the USA has imposed foreign direct product rule on each of the following countries to limit its excess advanced computer chips and chip making equipment। किसने, चाइना। Next is Kerch Bridge recently seen in the news connects which of the following countries। जो Kerch Bridge है ये किस कंट्री को, विद क्रीमिया, क्रीमिया को किससे कनेक्ट करता है, रशिया के साथ। नेक्स्ट इज रोसोटा स्टोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डिस्कवर्ड इन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन 1799। जो रोसोटा स्टोन है ये किस कंट्री में डिस्कवर की गई थी, 1799, कौन सी, इजिप्ट कंट्री में। नेक्स्ट इज द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 assessing future demand and sources of timber for a sustainable economy report was released by which of the following organizations। जो assessing future demand and sources of timber for sustainable economy report है ये पब्लिश कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज who amongst the following has won the IBSF World Billiards Championship 150 up title for the 5th time in high-end snooker club in the Kuala Lumpur, Malaysia। कौन है वो, पंकज Advani। Next is the current Chief Justice of India, UU Lalit, has nominated from the following as to the 50 Chief Justice of India, that is Dr. D.Y. Chandrachud। Next is recently the Crypto Asset Reporting Framework was released which of the following organizations। Crypto Asset Reporting Framework report है ये कौन रिलीज कर दिया, that is Organization for Economic Cooperation and Development, OECD। Next is Mahakal Law Corridor, the first phase of Mahakaleshwar temple was inaugurated by PM Narendra Modi। which are the following, ये कहाँ पे है, महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, उज्जैन में। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर नितिन गायडेकर inaugurated 81st annual session of the Indian Road Congress 2022 in which are the following। जो 81st annual session of Indian Road Congress है ये कहाँ पे inaugurate किया गया था नितिन गायडेकर जी ने, लखनऊ में। नेक्स्ट इज which of the following states has launched football for all initiative in association with the FIFA, that is उड़ीसा।
Next is Dragonfly rotorcraft will be launched by which of the following space agencies in 2027 to steady Titan, the largest moon of Saturn. ये कौन करेगा? NASA, that is National Aeronautics and Space Administration. Dragonfly rotorcraft ये कौन लॉन्च करेगा? NASA. किसके लिए? Steady Titan, जो किसकी मून है? Saturn की. Next is National Mineral Development Corporation has signed an agreement with which of the following coverage information communication technology and digital transformation service with NMDC. ये कौन है? Realty Corporation of India. Next is which of the following organizations have released a report mainstreaming biodiversity in forestry report. जो mainstream biodiversity forestry report ये कौन issue करता है? That is FAO Food and Agriculture Organization. Next is recently the India and which of the following countries have launched a new energy storage task force under the strategic cell energy partnership. जो इंडिया ने किसके फॉलोइंग कंट्रीज के साथ कौन एक न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स अंडर स्ट्रेटेजिक क्लीन पार्टनरशिप किया? ये कौन है? यूएसए के साथ. नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज or organizations have announced the plan to conduct a nuclear exercise called Steadfast known. ये किसने किया? Not only that is North Atlantic Treaty Organization. Next is Education 4.0 India 2022 report was released by which of the following organizations. जो Education 4.0 इंडिया का रिपोर्ट है 2020 का, ये रिलीज किसने किया था? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. Next is UN's International Civil Aviation Organization adopted an aspirational goal of reaching net zero emission by which of the following. जो US International Civil Aviation Organization है उन्होंने एक गोल अडॉप्ट किया, दैट इज एस्पिरेशनल गोल ऑफ रीचिंग नेट जीरो इमिशंस. कब तक ये अचीव करेंगे? 2050 तक. नेक्स्ट इज विलियमसन्स पिंक स्टार रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग. जो विलियमसन्स पिंक स्टार है ये किसके रिलेटेड है? डायमंड के साथ. नेक्स्ट इज recently which of the following countries has announced its partnership with Kerala to implement Little Kites program by Kerala's education department in the country's school. जो किस कंट्री के साथ केरला इंप्लीमेंट करने वाला है? क्यों कर रहा है? कौन? लिटिल काइट्स प्रोग्राम. किसके लिए? केरला एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए. दैट इज विद फिनलैंड. नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट अ वाटर सपोर्ट सेंटर इन कोलदम बर्मान बिलासपुर. इट इज द फॉलोइंग स्टेट. ये कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर. आंसर एवरी ईयर. इसका आंसर क्या है? 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अक्टूबर को. नेक्स्ट इज रिसेंटली इसरोज चंद्रयान 2 ऑर्बिटर्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स स्पेक्ट्रोमीटर जो है मैप्ड एंड एबंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स ऑन द मून. इसको किस केमिकल का? सोडियम उन्होंने वहां पे मैप किया. नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर हैज अपॉइंटेड a 3-member commission to consider the possibility of granting SC status to new persons who have historically belonged to scheduled castes but have converted to religion other than Hinduism, Buddhism and Sikhism. Who amongst the following will head this commission? ये कौन हेड करने वाला है? KG बालाकृष्ण. KG